Class 8, English Chapter, Wit and Wisdom, explained with Odia. The Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth, and cultural achievements. विजयनगर एम्पायर ताहार गौरव संपद और सांस्कृतिक सफलता पाई प्रसिद्ध थिला. Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva Raya, ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. एहार अनेक प्रसिद्ध राजामानंक मध्यरु कृष्णदेव राया ख्रीष्टपूर्व 1509 रु 1529 पर्यंत जड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा भावे विशेष भावरे परिचित थिले. His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire. तांको शासन कालकु साधारणतः विजयनगर साम्राज्यर स्वर्ण युग बोली कुहाजाए. A time when art, literature, and architecture flourished. सेही समयरे कला, साहित्य और स्थापत्य कलार बहुत उन्नति होइथिला. A great patron of learning, Krishnadev Raya was not only an eminent warrior but also a gifted poet. ज्ञानर महान प्रोत्साहक कृष्णदेव राया केवल जणे प्रसिद्ध योद्धा नुहे, से जणे प्रतिभाशाली कवि मध्य थिले. His works, such as the epic Amuktamaliyada and the Sanskrit drama Jambavati Parining, are acclaimed even today. तांकर कृतिमानंक मध्यरु मुक्तमल्यादा एवं संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणय माजी मध्य बहुत प्रशंसित अटे. Krishnadev Raya's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as the Ashtadiggajs. कृष्णदेवଙ୍କ दरबाररे 8 जण प्रसिद्ध कवि थिले, जेउमानंकु सामूहिक भावे अष्टदिग्गज बोली कुहाजाउथिला. These poets, including Alasani Peddana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. एही कविमानंक मध्यरे अल्लासानी पेद्दन ओ तेनाली रामकृष्ण थिले, जेउमाने निजर श्रेष्ठ कृतिमानंक द्वारा साहित्य परंपराकु समृद्ध करिथिले. Tenali Ramakrishna, in particular, was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. विशेष करी एनाली रामकृष्ण तांकर तीव्र बुद्धि और हास्यबोध पाई परिचित थिले, जहा तांकु राजदरबाररे कवि एवं चतुर परामर्शदाता भावे विशेष स्थान देइथिला. His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. दृष्टिगोचररे असमाधानीय लागुथिबा समस्यामानंकु से चतुरतार सहित समाधान करुथिबारु से साम्राज्यर इतिहासरे एक प्रिय व्यक्ति होई पारिथिले. Even the wisest rulers faced moments of disharmony, and at one such time, the king had a quarrel with his queen, Tirumalambal, over a seemingly trivial matter. सबुठु बुद्धिमान शासकमाने मध्य केबे केबे मतभेदर समयकु सामना करंती एवं सेहीपरि एक समयरे राजांकर तांको राणी थिरुमलंबा सह एक साधारण विषयकु नेई झगड़ा होइथिला. For weeks, he did not utter a single word to her, and in his frustration, stopped visiting her altogether. केतेक सप्ताह धरी से तांको सह गोटिए शब्द मध्य कथा होई नथिले एवं रोषरे तांकु देखा करिबाकु मध्य बंद करि देइथिले. Tirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. तिरुम्बाला अंबल बहुत दुखित और चिंतित थिले. से समस्याटिकु समाधान करिबा पाई यथा संभव सबु प्रयास करिथिले, किंतु विफल हेले. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. अन्य कौनसी उपाय नथिबारु से दरबारर मेधावी और चतुर कवि तेनाली रामकृष्णंक सहायता नेबाकु निष्पत्ति नेले. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. रामा धैर्यर सहित राणींक घटनावळीकु सविशेष सुनिले. The king wrote a poem, she began, her voice trembling. राजा गोटिए कविता लेखिथिले, से कंपित कंठरे कहिबा आरंभ कले.